Hello students, good morning you to all. मैं लास्ट क्लास रे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ी थिले। आज तार आ गोटे नेक्स्ट टॉपिक को जिबा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो पिला माने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कौन? ये तुमरो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एंड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज पर योर काउंसिल एग्जाम इज कंसर्न्ड। सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कौन? दुईटी जिनिस पिला माने एठी रहिला, गोटे लिंकेज आ गोटे सेक्स क्रोमोजोम। गोटे लिंकेज आ गोटे सेक्स क्रोमोजोम। लिंकेज पिला माने आमे पढ़िले जे इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स टुगेदर। गोटिए क्रोमोजोम उपरे अवस्थित थिबा जीन रो आलेली गुडी को कहवा हमें लिंक जीन। द alleles of the gene present the alleles of the gene present over same chromosomes are called linked genes, and it is the tendency of the linked genes to be inherited together if crossing over has not taken place. Heini jodi tahale it is the tendency of the linked genes to be inherited together. That is linkage. Again sex chromosome ame janiche je chromosome di prakar gote hochi autosome a gote hochi allosome. Autosome and allosome. Autosome carry the genes responsible for the somatic body character, the morphophysiological characteristics, somatic body character, normal body character, and your 1 to 22 pairs. यह autosome. And allosome किए ना, allosome carry the genes responsible for determining the sex, and that is 23rd pair. 23rd pair of chromosome ताको कहचे allosome. तेणु पिला माने एठी दुईटी जिनिस allosome and linkage. Linkage sex chromosome. सो ताहले सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कौन? पिला माने वन इज योर सेक्स लिंक्ड जीन, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड जीन कौन? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कौन? सेक्स लिंक्ड जीन, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. As we have already known that autosome contain the genes for somatic body character, and there are 1 to 22 pairs of chromosome. And allosome or sex chromosome or heterosome samita ko कहूचे contain the genes for determining the sex. एठी पिला माने सेक्स क्रोमोजोम X and Y sex chromosome.
सो सेक्स क्रोमोजोम जो एक्स आउ वाई जहा पाखरे वाई सेक्स क्रोमोजोम रहिला ताको आमे मेल कहिले सेक्स डिटरमिनेशन रे एवं सेक्स क्रोमोजोम एक्स केतेटा भी थाउ ता पाखरे ताको आमे फीमेल बोली कहूचे unless y is not there the individual is female तेणु एठी कहूची सेक्स लिंक्ड जीन the sex chromosome in addition to the normal sex determining gene also contains certain other genes responsible for somatic body character and that genes are called sex linked gene एमितिरे आमे कहि परिबा genes present over sex chromosome are called sex linked gene but normally we here mean to say the genes not responsible for determining the sex but present over same sex chromosome are called sex linked gene आउथरे पिला माने कहि दउची ऑटोसोम रे रहिला नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर पई एलोसोम रे रहिला सेक्स को डिटरमाइन करिबा पाई but sex chromosome also contains certain other genes not at all responsible for determining the sex rather they are responsible for certain other normal body character are called sex linked genes not at all responsible for determining the sex but present over the same sex chromosome are called sex linked gene and that normal body characters for which that sex linked gene responsible for called sex linked inheritance sex linked character and the pattern of inheritance of such sex linked character जो क्रम रे पिला माने सेही sex linked character inherit हला generation after generation from parents to offspring ताकू कहबा sex linked inheritance so तीन तो जिनिस पिला माने भल रे concept clear करो sex linked gene कौन sex linked character कौन sex linked inheritance कौन एवं ये जो sex linkage याकू प्रथमे डिस्कवर कले किए पिला माने टी.एच. मर्गन तेणु तांकू आमे कहिचे एक फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल genetics also he is called father of your sex linkage so T.H. Morgan in 1909 performed experiment on fruit fly आमे माने जानिचे मॉर्गन को कथा आसिला बेले आमे से जहारी ऊपर एक्सपेरिमेंट करिसंती से होची फ्रूट फ्लाई जहार जूलॉजिकल ना होची ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर सो पिला माने से जेते बेले गोटे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ऊपरे एक्सपेरिमेंट कले से डिस्कवर कले ए सेक्स लिंकेज सो आमे आगे देखिबा लेट्स फर्स्ट ऑब्जर्व हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर fruit fly come to his experiment fruit fly रो गोटे
कैरेक्टर से पिला माने नेले रेड आइड फीमेल कलर ऑफ आई को गोटे कैरेक्टर रूपे ऑब्जर्व कले रेड आइड फीमेल को क्रॉस कले व्हाइट आइड मेल ओबियसली को क्रॉस कले एवं F1 जेनेरेशन रे ही obtained Drosophila with a red eyed irrespective of sex, irrespective of male and female. In F1 generation he obtained all the Drosophila with red eyed. Male, female, irrespective of sex. So, like Mendelian monohybrid experiment, जो थरे एठी गोटिए कैरेक्टर नियाला कौन ना कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ आई हला रेड आई आउ हमरो व्हाइट आई. सो से जो रेड आई व्हाइट आई भितरे से ऑब्टेन कले पाइले F1 जनरेशन रे ऑल द Drosophila with a red eyed irrespective of sex. Again he made selfing और ताको हमें भी ब्रदर सिस्टर ब्रीड बोली कहबा. ब्रदर सिस्टर क्रॉसिंग means he made crosses within the individuals of first generation, means again the red eyed, obviously one male, another female. That is called selfing within F1 generation or brother sister mating. So एठी पिला माने से कौन पाइले ना 50% he obtained a red-eyed female. Red-eyed female. जितने फीमेल से सब जाक रेड आइड से पाई एवं एठो व्हाइट आइड एंड रेड आइड व्हाइट आइड मेल एंड रेड आइड मेल एमती गोटे भी फीमेल से पाई ना जे कि व्हाइट आइड सब जाक फीमेल को से रेड आइड रे से पाई. सो पिला माने एठी से गोटे जिनिस को स्पेकुलेट कले देखिले जे the gene responsible for eye color in Drosophila present over sex chromosome. The gene responsible for eye color in Drosophila that present over sex chromosome. So accordingly this type of inheritance occur. एवं आमे पिला माने सही जिनिसटा को आमे एकाथर के डायरेक्टली as per our syllabus we have in our syllabus sex linkage in human being with giving two examples, the color blindness and hemophilia. से थरे पिला माने आपको आमे बुझीबा. Because sex chromosomes are of two types, X sex linked inheritance, X sex linked
inheritance and Y sex-linked inheritance. Sex chromosomes are seen of two types, X and Y. So the gene, the sex-linked gene present over X chromosome are called X sex-linked gene, X sex-linked character, X sex-linked inheritance. And similarly, the sex-linked gene present over Y sex chromosome, Y sex-linked gene, Y sex-linked character, Y sex-linked inheritance. In case of sex chromosome X, because it is present in pair condition in case of female, homozygous condition, and present in hemizygous condition in case of male, and because there are two chromosomes, two homologous chromosomes present in female, the two alleles of the gene present in that two members of a homologous chromosome. And as we have already known that among the two alleles of the gene, one is dominant, another is recessive. So the X chromosome, the sex-linked gene present in XX chromosome may be present in dominant form, so dominant form and recessive form. Dominant form and recessive form. And since Y chromosome present in isolated condition single, so there is no question of dominant and recessive form. Therefore, sex-linked inheritance of two types. One is X sex-linked inheritance dominant form and X sex-linked inheritance recessive form. So first of all, your color blindness and hemophilia are the two sex-linked character. So let's discuss one by one. So first come to color blindness. Color blindness. What is color blindness? Pilamane, it is one disorder of vision. Color blindness. It is a defective condition. It is a disorder in which the person is unable to distinguish between various colors. आमे माने जानिचे, in retina of our eye, there are two type of cells. One is a rod cell, another is cone cell. And that cone cell receive that various color. And there are three types of color: red color, red cone cell, green color, and blue color. So this red color and green color, for this, the gene responsible for this present over sex chromosome. But the gene responsible for blue color present over autosome. That means that is autosomal disorder. Therefore, color blindness simply the red-green color blindness. Color blindness simply the red-green color blindness. Color blindness. First discovered by Horner. It is of three types. One is your protanopia, that is a red color blindness, deuteranopia,
nopia, the green color blindness, and tritanopia, the blue color blindness, and is autosomal, So, gene responsible for this red color and green color present over sex chromosome, so they are the sex linked character. So, the allele responsible for this present over X chromosome, but in recessive form. So, पिला माने एठी हमें टिके गोटे जिनिस को आगो देखिबा, गोटे recessive form, XX chromosome, recessive form रहला ये कौन हबो, एक्सप्रेस करिबो कि not expressive, here at both the X chromosome not present, also not expressive, only express in if at the 2 chromosome it present, expressive, and in case of a male, expressive, it express karibo, not expressive. Tamane the allele of gene present in recessive form, the allele of gene responsible for that disorder but present in recessive form here. आमे जानिचे गोटे dominant trait टीए express itself in homozygous condition, also in heterozygous condition. गोटे dominant trait टीए homozygous रे भी express करिबो, heterozygous रे भी express करिबो, but recessivity only express in homozygous condition, and here the single defective gene also express itself because there is no counterpart, because the counterpart is Y, which is not homologous to X. Then here we can say this is in hemizygous condition. So this is the most important thing. So only the recessive allele of gene express itself only in homozygous condition. Here also it can express because it is in hemizygous condition. But dominant trait express itself in homozygous condition, heterozygous condition. देखो पिला माने आमे किछिटा क्रॉस करी आमे तांकर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को एस्टैब्लिश करेबा. Normal male, colorblind female. Normal male, colorblind female. पिला माने normal male, colorblind female, normal male, colorblind female, colorblind female. सो आंक दी जन भितर आम क्रॉस करने को अलाउ करवा. सो कौन आम ऑफस्प्रिंग पाइबा,
एथिरु पिला माने दी प्रकार रो आमे गैमेट पाइले एथिरु गोटी प्रकार रो गैमेट पाइले दी प्रकार रो गैमेट पाइले बट ऑल आर ऑफ सिमिलर टाइप एक्स सी दिस इज गैमेट एक्स एक्स सी वाई एठी पिला माने हमें कौन पाइले एक्स क्रोमोजोम ऊपर किछि नाही माने तार डोमिनेंट फॉर्म इज अवेलेबल सो एठी पिला माने कौन पाइले नॉर्मल बट कैरियर फीमेल नॉर्मल बट कैरियर फीमेल एठी किंतु कौन पाइले कलर ब्लाइंड मेल कलर ब्लाइंड मेल एठी पाइले कलर ब्लाइंड मेल ये क्रॉस नंबर 1 गोटे नॉर्मल मेल सहित आमे जदि कलर ब्लाइंड फीमेल को क्रॉस करूचे आमे 50% पाउचे नॉर्मल बट कैरियर फीमेल बट अनदर 50% आमे पाउचे कलर ब्लाइंड मेल को पाउचे एठी पिला माने नॉर्मल बट कैरियर फीमेल माने ए पर्सनटिन सी नॉर्मल विजन हबो बट कैरी वन डिफेक्टिव जीन विथ हर ता संगरे गोटे डिफेक्टिव जीन से कैरी करूची तार अर्थ पिला माने एठी ये हला गोटे जीन सपोज ए जीन टी तुमरो विजन पाई दाई ए जीन टी तार दुईटी आलेली रे अछि ये तार गोटे आलेली ये तार गोटे आलेली दीटी आलेली आमे ताकू ना देइचे याकू देइचे आमे कैपिटल सी याकू देइचे स्मॉल सी नॉर्मल विजन एंड कलर ब्लाइंड विजन सो ए जीन टी एई ये हला जीन ये कोथि पाई दाई ना तमरो विजन पाई दाई विजन हला कोन ना कैरेक्टर आमे जो अनुसार कहले इच जीन इज रेस्पोंसिबल फॉर ए कैरेक्टर सो ये गोटे जीन ये हला गोटे कैरेक्टर सो ए जीन टी जो दीटी आलेली रे अछि ए जीन टी जदी एई आलेली रे रहिछि से विजन रे आसीबो कोन ना नॉर्मल vision means he or she can differentiate between red and green color that is normal vision and defective vision or color blind vision means cannot differentiate cannot distinguish between red and green color so ए जिनटी जदी ए आकार रे रहिला आमे ताकू कहबा color blind vision and the normal vision is in dominant form and the color blind vision is recessive form so this is students most important this is so in this regard this is normal female पिला माने आमे एक्स क्रोमोजोम ऊपर किछि रखिने माने एज्यूम करि नबा सेठी जीन रो डोमिनेंट आलेली अछि ओनली टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ए जो कैपिटल टी और स्मॉल टी एको अवॉइड करबा पई ए कंफ्यूजन को आमे एज्यूम करि नबा एठी हमरो डोमिनेंट फॉर्म माने कैपिटल सी अछि तेनु येला नॉर्मल फीमेल एठी हमें एज्यूम कले ता माने एठी ये डोमिनेंट फॉर्म ये रिसेसिव रे अछि तेनु ये हला नॉर्मल फीमेल बट कैरी वन डिफेक्टिव जीन विथ हर ता संगरे गोटे डिफेक्टिव जीन कैरी करूची वे तो को जनरेशन रे से एक्सप्रेस हे पारे सो नॉर्मल बट कैरियर फीमेल सेकंड कैटेगरी दिस इज थर्ड कैटेगरी this is color blind female
color blind female, as the recessive trait express itself in homozygous condition. So there are three types of female. One is normal female, another is a normal but carrier female, another is color blind female. Similarly, male two category. This is normal male. Normal male. किछि नहीं माने एठी पिला माने तारो डोमिनेंट एलीली अछि एठी एवं डोमिनेंट एलीली रेस्पोंसिबल फॉर नॉर्मल विजन एवं दिस इज कलर ब्लाइंड मेल. कलर ब्लाइंड मेल कहीं की पिला माने एठी सिंगल डिफेक्टिव जीन दो प्रेजेंट इन रिसेसिव फॉर्म yet it express itself because of absence of its counterpart, because there is Y chromosome present which is not homologous to X. आमे कहिचे जीन रो दुईटी आलेली गोटे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम रो दुईटी मेंबर रे ही रहिबे. जदि क्रोमोसोम दीटी जाक परस्पर प्रति होमोलोगस नुह ताहले जीन रो आलेली गोटिए ही रहिबे. सेठी पिला माने मने पकाओ आमे कहिचे हेमिजाइगस कंडीशन. Whenever there is only one allele present, so the color blind male, it is hemizygous for color blind male in female. So 5 categories of pupils are there. Female, there are of 3 categories: normal female, normal but carrier female, color blind female, normal male and color blind male. So एई सीक्वेंस रे आमे प्रत्येक ताकू क्रॉस करिबा एवं तापरे तारो कंक्लूजन आमे पिला माने ड्रॉ करिबा.